You have to construct matrix A. It is Aij and the order is 3 by 3, where Aij is I minus j. State whether A is symmetric or skew symmetric. If matrix A is of the order 3 by 3, then matrix A will be like this. First row, first element, first row, second element, first row, third column, second row, first column, second row, second column, second row, third column. This is 3 by 3 matrix, right? Now we have to find all the elements. So A11, it is I minus j. So 1 minus 1 will be 0. A12, it is 1 minus 2 is minus 1. A13, it is 1 minus 3 is minus 2. A21, 2 minus 1 is 1. A22, 2 minus 2 is 0. A23, 2 minus 3 is minus 1. A31, 3 minus 1 is 2. A32, 3 minus 2 is 1. A33, 3 minus 3 is 0. So if we have a matrix here, then it is 0 minus 1 minus 2, sorry, it will be 0 minus 1 minus 2, 1 0 minus 1, 2 1 0. This is your given matrix. अभी हमको देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे. तो इधर A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 minus 1 minus 2, 1 0 minus 1, 2 1 0. तो आपने देखा कि इसको और इसको अगर कंपेयर करके देखेंगे तो A is minus A transpose, so they are skew symmetric. It is skew symmetric. अगर A is equals to A transpose होता तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते, लेकिन वो माइनस A ट्रांसपोज है, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फाइन. नाउ सम नंबर 11. ये एक्चुअली इक्वेशन की तरह ही है. यू हैव टू सॉल्व इट फॉर x एंड y, where 3x minus y is equals to matrix 1 minus 1 minus 1 1 and x minus 3y is equals to 0 minus 1 0 minus 1. तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 3x minus y 1 minus 1 minus 1 1. I'll multiply it with 3. It will become 3x minus 9y. If I multiply this matrix with 3, then it will be 0 minus 3 0 minus 3. Now we can solve them. I will minus this minus this plus. This will be 8y is equals to, अब इसमें से ये कैसे माइनस होगा, 1 minus 0 is 1, minus 1 minus of minus 1 is 3, minus 1 and 0 is minus 1, 1 minus 3 is, अभी ये 1 minus of minus 3 हो जाएगा, so plus 3, so that will become 4. So 8y will be 1 3 minus 1 4.
So y will become 1 by 8 . One 3 minus 1 4. We can solve it for x also, but this will become very long cut. Let us first check the sum actually. Is the sum same? Is it same? Because ये answer उनका और अपना match नहीं हो रहा है. 1 minus 1 minus 1 1. X minus 3y. 0 minus 1 0 minus 1. फक्त इकडे काहीतरी व्हॅल्यू चुकलेली आहे. This is minus 1. This is also minus, right? 1 minus 0 is 1. Minus 1 minus, oh, sorry. This is 2. That's why it was coming from. This is 2. Sorry, my mistake. 1 minus 0 is 1. Minus 1 minus of minus 3 will be plus 3. 1 minus 1 plus 3 is 2. This is minus 1 and this is 4. तो ये 2 है, ये भी 2 है. ये आपका आ गया भाई. ओके, अब ये भाई जो है उसको हम लोगों ने अगर इधर डाल दिया तो हमको x भी मिलेगा. इट विल बी 3x माइनस y में लिखूंगी 1 by 8, 2 by 8 minus 1 by 8, 4 by 8 is equals to 1 minus 1 minus 1 1. So can you try out with x? So 3x is one minus 1 minus 1 1 आणि हे तिकडे जाऊन प्लस होईल. So it will be plus 1 by 8, 2 by 8 minus 1 by 8 and 4 by 8. So you can add this, add correspondingly. So 1 plus 1 by 8 will become 9 by 8. Minus 1 plus 2 by 8 will become minus 6 by 8. Then this will be minus 1 minus 1 by 8. This will become minus 9 by 8. And this will be 3 by 2 or 6 by 8. Because it will be 1 plus 4 by 8. One plus 4 by 8 will be 12 by 8 actually. So this will become 12 by 8. I will 3x. So x will be equal to, this 3 will come and divide here. If it is dividing, then it will divide all the values. So 9 by 8 divided by 3 will become 3 by 8. Minus 2 by 8 divided by 3 केलं minus 3 by 8 and 4 by 8. So this will be your x. Yes, this is x. And this is your given y. आप अभी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करोगे, minus 2 by 8 की जगह पे 1 by 4 भी लिख सकते हो, और you can keep it as it is, no issue. Similar to 11th, the 12th sum is 2a minus b is 6 minus 6 0 minus 4 2 1. A minus 2b is
3, 2, 8 minus 2, 1 minus 7. अब इसका a और b निकालने का है, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 2a minus b, 6 minus 6, 0 minus 4, 2, 1. 2a minus 4b is 6, 4, 16 minus 4, 2 minus 14. Now what you can do here is you can do minus. So this will get cancelled. This will be 3b is equals to, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है. तो 6 minus 6 is 0, minus 4 minus 4, minus 4 minus of minus 4 will again become 0. Minus 6 minus 4 will become minus 10. 2 minus 2 will become 0. 0 minus this will be minus 16, and 1 plus this will be 15. So this is 3b is equals to 0 minus 10 minus 16, 0, 0, 15. B is, you will divide B by this, 1 by 3. 0 minus 10 minus 16, 0, 0, 15. Now, this value of B, you can put in any one of this equation and find out the value of A. इसमें अगर डाल देंगे इसको और फिर हम लोग एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं. तो 2a minus b में मैं b की वैल्यू डाल दूंगी. It will be 0, 0, minus 10, 0, minus 16, minus 15. Sorry, plus 15. It's not minus 15. It's plus 15. Is equals to 2a minus b is 6 minus 6, 0, minus 4, 2, 1. So 2a is 6 minus 6, 0, minus 4, 2, 1. This will come there and it will become plus. And it will be 0, minus 10, minus 16, 0, 0, 15. So it is 2a, 6 plus 0 will become 6, minus 6 plus minus 10 will become minus 16. This will be minus 16. This will be minus 4, 2. And this will become 16. अब आप अगर इधर 2 से divide करोगे तो this will be 3 minus 2, minus 8, 1, minus 8, 8. तो सॉरी, ये इधर 1/3 है, तो ये भी इधर 1/3 होगा, तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा. Sorry, it was my mistake. I forgot to take 1/3 on this side and this side, both sides. So it will be 6 plus 0 as it is, minus 6 minus 10/3, 0 minus 16/3, minus 4 plus 0. क्योंकि 1/3 into 0 will be 0. Then 2 plus 0 and 1 plus 15/3. This will be 6. This is minus 18. So it will become minus 18 minus 10/3. So minus 28/3. ये हो जाएगा minus 16/3. ये होगा minus 4, 2. और ये हो जाएगा 45. This will be 60. ये 3, sorry, 18/3 हो जाएगा. And this is 2a. So a will be 3 minus 2, minus 14/3 and 1,
-8/3 and 9. Sorry, this is 9/3. 9/3 is 3. So this is your answer, A and B. Easy. Now the 13th sum is you have to find x and y. It is 2x plus y upon 3. Sorry, 3 minus 1, 1, 4y, 4 plus -1, 3, 6, 0, 4, 3. It is equal to 3, 5, 5, 6, 18, 7. और आपको x और y निकालना है, तो आप क्या करोगे, अभी इनका एडिशन होगा ना, तो विल जस्ट फॉर्म एन इक्वेशन. 2x plus y minus 1 is 3. So 2x plus y minus 1 is 3. And then here it is 4y plus 0 is 18. 4y is 18. So y is 18/4 और it is 9/2. अब ये y की वैल्यू इधर डाल देंगे हम लोग. तो 2x plus 9/2 minus 1 is equals to 3. 2x plus 9 minus 2/2 is equals to 3. 2x plus 7/2 is equals to 3. This is 3.5, by the way. So 2x is 3 minus 7/2. 2x will be minus 1/2. This is 6 minus 7/2 minus 1/2. ये 2 उधर चला गया, x will become minus 1/4. And y is 9/2 or 18/4. These are the values. X is minus 1/4, y is 9/2 or 18/4. Question number 14. 2a plus b, 3a minus b, c plus 2d and 2c minus d. It is 2, 3, 4 minus 1. You have to find a, b, c, d. तो हम लोग क्या बोलेंगे, if this is equal to this, देखो ये equality of matrix है. If this matrix is equal to this matrix, then we will add them. So 2a plus b is equals to 2 and 3a minus b is equals to 3. C plus 2d is 4 and 2c minus d is minus 1. So 2a plus b is equals to 2 and 3a minus b is 3. मैं इनको कट कर दूंगी. This is 5a is equals to 5, a is equal to 1. C plus 2d is 4, 2c minus d is minus 1. This will be 2c plus 4d is 8 and 2c minus d is minus 1. तो मैं इसको माइनस कर दूं. This will get cancelled. This is 5d is equals to, so this will become 9. So d will become 9/5. अब वैसे ही आप इसको और इसको अगर सॉल्व करोगे, सॉरी ये a आया तो आप इधर ही डाल के b निकाल सकते हो. If a is 5, I will put it here. So 2 into 1 plus b is equals to 2. So what is b in this case? b is 0. a1 आया, b0 आया. d अगर 9/5 आया तो आप d की वैल्यू इसमें डाल दो. c plus 2 into 9/5 is equals to 4. So c plus 18/5 is equals to 4. c is 4 minus 18/5. It is 20 minus 18, that is 2/5. तो c की वैल्यू क्या आएगी? 2/5. तो a की वैल्यू क्या आई? 1, b is 0, c is 2/5, d is 9/5. What have we done? We have only equated the fractions. Sorry, हम लोगों ने बस मैट्रिक्स को इक्वेट किया है और कुछ भी नहीं. ये जो सारे मैट्रिक्स थे हम लोगों ने क्या किया, इनको बस, क्योंकि वो इक्वल मैट्रिक्स है.
तो हम लोगों ने उनको बस इक्वेट किया, तो ये 2a प्लस बी एंड 3a माइनस बी, ये आपका हो गया क्या, 2a प्लस बी इज 2 एंड 3a माइनस बी इज 3, ये कट हो गया, ये हो गया 5a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 1। मैंने a की वैल्यू अगर इसमें डाल दी या इसमें डाल दी तो मुझे वैल्यू आ गई 2 into 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 2, सो 2 प्लस b इज 2, सो b इज इक्वल्स टू 0। तो a 1 आ गया, b आ गया आपका 0। अब हम लोग c और d के लिए भी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। c प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, 2c माइनस d इज इक्वल्स टू -1। तो मैंने इसको 2 किया, 2c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 8 and 2c minus d is equals to -1. This is 5d is equals to 9, so d becomes 9/5. After solving, c will become 2/5. ये वैल्यूज आ गए हम लोगों के।